So in today's lecture, we will discuss the secondary wastewater treatment option that is known as waste stabilization pond, and it is one of the most cheap wastewater treatment plant treatment process. So waste stabilization ponds are basically a shallow man-made basin into which the wastewater flows and from which, after the retention time of several days, a well-treated effluent is discharged. So basically waste stabilization ponds एक हमारे पास बेसन होता है जिसमें हम वेस्ट वाटर को ऐड करते हैं और आफ्टर कुछ दिनों के लिए उस वेस्ट वाटर को इस टैंक के अंदर छोड़ देते हैं एंड आफ्टर अ फ्यू डेज द वाटर इज़ ट्रीटेड बायोलॉजिकली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं इनटू यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स। सो हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वेस्ट वाटर में वो रिमूव हो जाता है और आपके पास पानी ट्रीट हो जाता है। एडवांटेजेस जो है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड्स की, सबसे पहला ये कि इट्स अ सिंपल सिटी, ठीक है, इसकी सिंपल प्रोसेस है, कोई आपको स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं, कोई इसमें हाई फाई कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसीलिए ये लो कॉस्ट भी है और हाई एफिशिएंसी रिमूवल हमारे पास इससे अचीव होती है ऑर्गेनिक मैटर की। So because of these properties, they are highly appropriate for use in developing countries like Pakistan. So जितनी भी developing countries हैं या low income countries हैं, they can easily use waste stabilization pond to treat the wastewater. अच्छी efficiency, low cost और simple process की वजह से इसको developing countries easily use कर सकती हैं. So there are different types of the waste stabilization ponds, ठीक है, हमारे पास ये बेसिकली सीरीज़ में लगते हैं, ये जितने भी आपके पास वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स और हर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स में डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है, जो कि हम नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में उसको डिस्कस करेंगे। सो वेस्ट स्टेबलाइजेशन सिस्टम कंप्राइज अ सिंगल सीरीज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स द फर्स्ट वन इज anaerobic pond, second one is facultative, and then maturation ponds, and we will discuss each type of the ponds. इसमें बेसिकली होता क्या है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं और उसमें बेसिकली हम क्या चीज़ बेहतर तरीके से रिमूव करते हैं। सो इन सेंस anaerobic and facultative ponds are designed for the biody removal, ठीक है, जैसे एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव पॉन्ड्स जो हैं वो बेसिकली हम डिज़ाइन करते हैं जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वेस्ट वाटर को उसमें से रिमूव करने के लिए, ठीक है, और जो मैचुरेशन पॉन्ड है वो हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि अब जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में प्रेजेंट होंगे वो तो रिमूव नहीं हो जाते, सो उनको रिमूव करने के लिए हमें मैचुरेशन पॉन्ड्स लगाता है। सो मैचुरेशन पॉन्ड्स आर डिज़ाइन टू रिमूव द पैथोजेंस फ्रॉम द वेस्ट वाटर विच इज़ इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स की, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर वेस्ट वाटर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एंड यूज़ ऑफ द वेस्ट वाटर, ठीक है। सो हम सिंपली एनारोबिक पॉन्ड भी लगा सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इंस्टॉल अ सिंगल फैकल्टेटिव पॉन्ड और वी कैन इंस्टॉल एनारोबिक and we can install anaerobic, facultative and maturation pond, and we can also involve two anaerobic pond in a series, in parallel, ठीक है। इसी तरह आप दो फैकल्टेटिव पॉन्ड भी पैरेलल्स लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आप मैचुरेशन पॉन्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एनारोबिक लगा सकते हैं, सिंगल फैकल्टेटिव लगा सकते हैं। सो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर वेस्ट वाटर एंड द डिग्री ऑफ अ ट्रीटमेंट यू रिक्वायर्ड फॉर द वेस्ट वाटर, और जो भी आपने वेस्ट वाटर को यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आप वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। So waste stabilization pond in many instances only anaerobic and facultative ponds will be required, ठीक है। जो आपके पास maturation pond है वो आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल पर्पसेस के लिए, वो हम यूज़ करते हैं फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन पर्पसेस के लिए। अब अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन क्या होती है? सो रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन रेफर्स टू द इरिगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्रॉप्स सच एज कॉटन, सनफ्लावर, फूड क्रॉप एंड नॉट फॉर अ डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन। ऐसी क्रॉप्स जिनका डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन नहीं होता उसके लिए आप मैचुरेशन पॉन्ड को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ फैकल्टेटिव और एनारोबिक पॉन्ड से वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, और वेस्ट वाटर को आप अप्लाई कर देते हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए। लेकिन अगर आपके इरिगेशन पर्पसेस
अनरिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन के लिए है, जिसमें हमारे पास वेजिटेबल्स क्रॉप्स आ जाती हैं, रॉ वेजिटेबल्स यूज़ हो सकती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग एज अ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं एज अ सैलड और कुकिंग के लिए। तो उस केस के लिए आप मैचुरेशन पॉन्ड को लाजमन यूज़ करेंगे बिकॉज हमने पैथोजेंस को रिमूव करना है फ्रॉम द वाटर। सो एडवांटेजेस क्या है कि आपके पास हाई रिडक्शन इन पैथोजेंस हो जाते हैं, ठीक है। कैन बी बिल्ड एंड रिपेयर विद द लोकल अवेलेबल मटेरियल, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, नो इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो रियल प्रॉब्लम्स विद द फ्लाइज और ऑर्डर इफ़ डिज़ाइन करेक्टली। डिसएडवांटेजेस सिर्फ और सिर्फ इसका ये कि इट्स रिक्वायर्ड फॉर अ लार्ज लैंड एरिया, ठीक है। इसकी कैपिटल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ योर लैंड। सिर्फ इसमें क्योंकि आपके जो कैपिटल कॉस्ट या फर्स्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा है बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आपकी जो लैंड की प्राइस है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो होगी। Now we are going to discuss one by one every pond. So first we will discuss anaerobic ponds. So anaerobic ponds are commonly 2 to 5 meter depth and receive such a high organic loading rate, usually greater than 100 grams of POD per meter cube per day, which is equivalent to 3000 kg per hectare per day, that they contain no dissolved oxygen and no algae, ठीक है। क्योंकि आप नाम से देख रहे हैं एनारोबिक, सो एनारोबिक दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, so it will treat the wastewater in the absence of oxygen and convert the organic matter into a useful byproduct like CH4, H2S, carbon and NH3. BOD or suspended solid removal 40 to 70% you can achieve in anaerobic pond. The retention times are very short, 1 to 5 days. आप सिर्फ पानी को इस anaerobic pond में 1 से 5 दिन तक रख सकते हैं। इसमें एक्चुअली ऑर्डर प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है विच हैव अ पंजेंट स्मेल। आपकी जो स्लाइड स्लोप्स होंगी वो 1 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल, लेंथ टू विथ रेशो 3:1 एंड डिटेंशन टाइम दैट इज़ 1 to 5 days. सो डिटेंशन टाइम एंड रिटेंशन टाइम इज़ बेसिकली सिमिलर कि कितने टाइम के लिए पानी जो है वो स्टे करता है इन द रिसीविंग स्ट्रीम्स, सॉरी इन द पॉन्ड्स। सो BOD रिमूवल इन एनारोबिक पॉन्ड, BOD रिमूवल किस तरह से हम अचीव करते हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिमूव होता है। द फर्स्ट वन इज़ अ सेगमेंटेशन ऑफ सेलुलेबल सॉलिड्स, सेकेंड वन इज़ अ सब्सिक्वेंट एनारोबिक डाइजेशन इन द रिजल्टिंग स्लज लेयर, ठीक है। आपके पास जो डी स्लजिंग का पीरियड है दैट इज़ 3 to 5 years, सो आप इसको यूज़ करते हैं और जितना भी सॉलिड सेगमेंट आपका सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द टैंक, सो आफ्टर 3 to 5 years यू विल रिमूव दैट स्लज फ्रॉम द बेसन, अदरवाइज इट विल डिक्रीज द डेप्थ ऑफ द एनारोबिक पॉन्ड एंड इट विल नो मोर कंसीडर एज एनारोबिक पॉन्ड, जिस तरह उसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज होगी। एनारोबिक पॉन्ड्स वर्क एक्सट्रीमली वेल इन अ वार्म एनवायरनमेंट्स। डिज़ाइन इसको हम किसके बेसिस पे करते हैं, दे डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ वॉलोमेट्रिक लोडिंग रेट, और इसको हम लैम्डा वी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ मेजर इन ग्राम्स पर मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस फार्मूला विच इज़ LI इंटू Q ओवर VA। सो यहाँ पर LI जो है वो आपके पास इन्फ्लुएंट BOD है दैट इज़ इन मिलीग्राम्स पर लीटर, Q जो है दैट इज़ द फ्लो ऑफ द वेस्ट वाटर विच इज़ मेजर इन मीटर क्यूब पर डे, एंड VA दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एनारोबिक पॉन्ड मेजर इन मीटर क्यूब। सो आपकी जो वॉलोमेट्रिक BOD लोडिंग रेट है एनारोबिक पॉन्ड में वो आपके पास 100 to 400 ग्राम्स पर मीटर क्यूब पर डे के बीच में लाई करनी चाहिए। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो एनारोबिक पॉन्ड है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और वार्म क्लाइमेट्स में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। सो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी इन 1986 एंड 1979 बाय मार्ला एंड पार्सन इन विच दे हैव ड्राइव द वॉलोमेट्रिक लोडिंग रेट फार्मूला, क्योंकि हर टेम्परेचर के ऊपर वॉलोमेट्रिक लोडिंग रेट जो होगी वो डिफरेंट होगी और जो आपकी BOD रिमूवल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो डिफरेंट होगी। सो उन्होंने ये स्टडी किया कि उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के बीच में स्टडीज़ की और उससे एक रिलेशनशिप ड्राइव किया जिससे आप वॉलोमेट्रिक लोडिंग रेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 10 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर लेस दैन 10 डिग्री सेल्सियस है तो आपकी वॉलोमेट्रिक लोडिंग रेट जो है वो लो होगी, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, इसलिए आप ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कम अमाउंट में वाटर के अंदर डिस्चार्ज करेंगे और आपके पास जो BOD रिमूवल होगी वो 40% तक अचीव होगी।
So when your temperature is between 10 to 20, you will use this formula to calculate the volumetric loading rate, that is 20 into T divided by minus 100. So T जिस temperature के ऊपर आप find out करना चाहते हैं, इसी तरीके से BOD removal भी आप find out कर सकते हैं by using a formula 2T plus 20, and you will put the temperature at required temperature, you will calculate the BOD removal. Similarly, if temperature is between 20 to 25, so you can calculate the volumetric loading rate and BOD loading rate. मैक्सिमम हमारे पास अगर टेम्परेचर 25 से ज़्यादा है तो हमारे पास मैक्सिमम जो लोडिंग रेट है दैट इज़ 350 kg पर मीटर क्यूब पर डे, एंड द मैक्सिमम BOD रिमूवल फ्रॉम एनारोबिक पॉन्ड जो हम अचीव करते हैं दैट इज़ 70%. ठीक है, सो ये फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द लिटरेचर टू कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट एंड BOD रिमूवल अचीव्ड बाय एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. अच्छा जी, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम इन अ पॉन्ड इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम थीटा ए. थीटा ए को हम रिटेंशन टाइम से डिनोट करें वी ए जो एनारोबिक पॉन्ड है, क्यू जो है वो आपके पास फ्लो है. सो देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट नोट दैट द रिटेंशन टाइम इन एनारोबिक पॉन्ड शुड नॉट लेस देन 1. ठीक है, यू शुड हैव टू अडॉप्ट 1 day एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी हैव, क्योंकि हम 1 day से कम रिटेंशन टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी आपके एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने में, या आप समझ सकते हैं कि डीकम्पोजिशन स्टार्ट करने में 1 day से ज़्यादा लेता है. सो अगर आपने 1 day, क्योंकि आपके जितना भी होगा वेस्ट वाटर में सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे, सो बैक्टीरिया और जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो स्लोली ग्रो करते हैं. ठीक है, सो अगर आपने लेस देन 1 दिया तो आपका जो प्रोसेस है वो एनारोबिकली नहीं होगा, वो एरोबिकली प्रोसेस होगा. सो आपने अलाउ करना है मिनिमम 1 day, ताकि आपके जितने भी एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो कर सकें और वो आपकी जितनी भी डीकम्पोजिशन है वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर सकें. और आपने 1 day अडॉप्ट करनी है तो टेम्परेचर ग्रेटर दैन 20 डिग्री हो. ठीक है, सो ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज आपको याद होनी चाहिए. उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनारोबिक पॉन्ड की ज्योमेट्री और डायमेंशंस. ठीक है, सो ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूलाज, जितने भी ज्योमेट्री इसके ऊपर लिखी हुई हैं. सो बेसिकली दिस फिगर शोज द कैलकुलेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम पॉन्ड डायमेंशंस फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन मिड डेप्थ. ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास जो हम फार्मूले से लेंथ और विड्थ रेशियो कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ 3:1. दैट इज़ बेसिकली आपके पास मिड डेप्थ का विड्थ और रेशियो आएगा. ठीक है, और उसकी टॉप और बॉटम कितना होना चाहिए, यानी साइड स्लोप कितनी होनी चाहिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला. यहाँ पे जो L है दैट इज़ बेसिकली अ मिड डेप्थ लेंथ. ठीक है, और D जो है वो आपके पास डेप्थ है. ठीक है, एंड 2F इज़ द, F जो है वो बेसिकली फ्री बोर्ड है, D इज़ द डेप्थ है. ठीक है, तो हाफ डेप्थ नीचे वो आपकी मिड डेप्थ हो जाएगी, और जो आपका लेंथ है दैट इज़ L जो आप कैलकुलेट करेंगे, और जो आपकी बॉटम की लेंथ होगी वो आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग अ फार्मूला L माइनस एन डी. ठीक है, और टॉप की आपने जो लेंथ फाइंड आउट करनी है, यू विल यूज़ फार्मूला L प्लस एन इंटू D प्लस 2F. सो दीज आर द फार्मूला टू कैलकुलेट द बॉटम लेंथ एंड बॉटम डेप्थ, सॉरी बॉटम लेंथ एंड टॉप लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ एंड विड्थ. सो आफ्टर डैट हम डिस्कस करेंगे फैकल्टेटिव पॉन्ड. तो फैकल्टेटिव पॉन्ड जो है वो आपके पास 1 to 2 मीटर डीप होती है. फैकल्टेटिव बेसिकली होता है ऐसा पॉन्ड जिसमें ऐसे बैक्टीरियाज हों जो एरोबिकली एनारोबिकली दोनों परफॉर्म करते हैं, यानी दोनों टाइप के बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी ऑक्सीजन और प्रेजेंस में भी हो सकते हैं और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी परफॉर्म कर सकते हैं. इसकी साइज स्लोप 1 वर्टिकल 3 रेशो होना चाहिए, लेंथ टू विथ रेशो 3:1, और इसका रिटेंशन टाइम 7 to 20 days होना चाहिए. दे आर डिज़ाइन फॉर BOD रिमूवल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिवली लो लोडिंग रेट, लो सरफेस लोडिंग रेट दैट इज़ 100 to 400 kg ऑफ BOD पर हेक्टर पर डे. ये यूनिट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हेक्टर पर डे, टू परमिट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी एल्गल ग्रोथ पॉपुलेशन. ये आपके पास फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसकी डेप्थ 1 to 2 मीटर है, और हमारे पास यहाँ पर जो बॉटम में एनारोबिक एनवायरनमेंट होता है, टॉप पे एरोबिक होता है क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, और बीच में एनारोबिक या मीडियम आप कह सकते हैं जहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक पॉन्ड्स जो हैं वो मीट करते हैं. सो ऑक्सीजन फॉर BOD रिमूवल बाय द पॉन्ड बैक्टीरिया इज मोस्टली जनरेटेड बाय एल्गी फोटोसिंथेसिस. जो भी यहाँ पर BOD रिमूव्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया की, वो एल्गल प्रोडक्शन या एल्गल फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है.
अब यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स होते हैं, प्राइमरी फैकल्टेटिव पॉन्ड एंड सेकेंडरी फैकल्टेटिव पॉन्ड। प्राइमरी फैकल्टेटिव पॉन्ड विच रिसीव रॉ वेस्ट वाटर, मीन्स कि हम उससे पहले एनारोबिक पॉन्ड इंस्टॉल नहीं करते हैं और हम डायरेक्टली वाटर को फैकल्टेटिव पॉन्ड में भेजते हैं, तो दैट फैकल्टेटिव पॉन्ड विल बी नोन एज प्राइमरी फैकल्टेटिव पॉन्ड। सेकेंडरी फैकल्टेटिव पॉन्ड विच रिमूव द सेटल्ड वेस्ट वाटर, ठीक है, मीन्स ये कि हम वाटर पहले anaerobic pond में ट्रीट करते हैं, and from the anaerobic pond the water will be sent to a facultative pond and that facultative pond will be known as secondary facultative pond. So हम फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से BOD के मैकेनिज्म्स होते हैं सेकेंडरी फैकल्टेटिव पॉन्ड जिसमें आपकी BOD रिमूव होती है, ठीक है। सो द सेकेंडरी फैकल्टेटिव पॉन्ड इन विच द रिमेनिंग नॉन सेटलेबल BOD, द वाटर विच विल कम आफ्टर द anaerobic pond, that non-soluble BOD will be oxidized by bacteria, and these bacteria obtain the oxygen they need from the photosynthetic activity of microalgae, which grow naturally and abundantly in facultative ponds. The algae in turn depend largely on the bacteria for the carbon dioxide, which they use for the synthesis, and they use the carbon dioxide released from the bacteria and convert them into oxygen which is required by bacteria for the decomposition. So their existence is a mutualistic relationship between the pond algae and the pond bacteria. So BOD removal in secondary facultative pond take place. जैसे कि हमने डिस्कस किया in the last slide that there is a mutualistic relationship between the bacteria and algae. So that relationship is known as bacteria and algae symbiosis. So what happened in the bacteria and algae symbiosis? So as we know that in aerobic zone of the pond, bacteria and algae exist in a mutual beneficial or symbiotic relationship. Algae produces oxygen which is during the photosynthesis, which is needed by the bacteria to metabolize the organic matter, whereas bacteria release carbon dioxide and other inorganic matter like nitrogen and phosphorus, which are needed by algae to grow and meet its food requirement. Hence, under the normal light conditions, the metabolic action of these two microbial groups complement each other. So you can also show in the flow diagram that algae release oxygen which is used by the bacteria, and bacteria use this oxygen to decompose the organic matter into a useful byproduct like carbon dioxide, nitrogen and other inorganic particles, and produces some new cells. So these carbon dioxide and nutrient nitrogen is used and phosphorus is used by algae for the photosynthesis process and to release oxygen in the atmosphere. So whereas BOD removal in secondary facultative pond, so as we discussed in the last slides, that as a result of photosynthetic activity of pond algae, there is a diurnal variation in the concentration of dissolved oxygen. The wind has an important effect on the behavior of facultative pond as it induces vertical mixing of a pond liquid. So now what happened in BOD removal in primary facultative pond? So in primary facultative pond, the function of anaerobic and secretory functions are combined together. ठीक है, इसमें जो भी एनारोबिक का फंक्शन है फैकल्टेटिव पॉन्ड का वो और सेकेंडरी फैकल्टेटिव पॉन्ड का जो फंक्शन है वो कंबाइन हो जाता है फॉर द BOD रिमूवल, ठीक है। सो इसमें जब आप इन्फ्लुएंट को ऐड करते हैं, सम ऑफ द इन्फ्लुएंट विल बी डीकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स एंड देन देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया विल यूज द ऑक्सीजन रिलीज बाय एल्गी एंड एल्गी विल reduce oxygen and bacteria will decompose the organic matter into carbon dioxide and other inorganic particles like nitrogen and phosphorus, which will be used by the algae for the photosynthesis, and it will release oxygen for the bacteria. सो यहाँ पर आपके पास एनारोबिक पॉन्ड और सेकेंडरी फैकल्टेटिव पॉन्ड का जो BOD रिमूवल का मैकेनिज्म है वो इकट्ठे ही होगा प्राइमरी फैकल्टेटिव पॉन्ड में।
So whereas the design is concerned of the facultative pond, so they are designed on the basis of surface BOD loading rate, and it is denoted by lambda s, that is the kg of BOD per hectare per day, which is given by the formula, that is 10 into Li plus into Q divided by AF. So Li is the influent concentration of a BOD, whereas Q is the wastewater flow in meter cube per day. AF is a facultative area in meter square. ठीक है, the permissible design value of AS is selected on the basis of temperature on appropriate global dimension equation was given by Mara in 1987. So you can use this formula to calculate the surface loading rate at any temperature. So here you can, so by using the equation which is given in the last slide, the surface loading rate is calculated at different temperature from 11 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. So maximum is 440 kg of BOD per hectare per day. So retention time can be calculated by using this formula, that is theta f, that is a retention time in facultative pond, equals to area of facultative pond into the depth of the pond divided by the mean flow, that is meter cube per day. Note that the minimum value of retention time of 5 days should be adopted for a temperature less than 20 degrees Celsius and 4 days for 20 degrees Celsius. So now we will discuss the maturation pond. This is the third pond. So the primary function of the maturation pond is the removal of pathogens present in the wastewater, and the second is the removal of organic matter, that is BOD. It is the byproduct of the process. BOD reduction is not significant in the maturation pond. These are fully aerobic and used after facultative with the purpose of polishing of effluent and removal of pathogens. The series of maturation pond with the depth 1 to 1.5 meter receive the effluent from facultative pond. The side slope is 1 vertical, 3 horizontal. Length to width ratio is 3:1, and the retention time is 4 to 14th. The size of the maturation So the size and the number of maturation pond will depend upon the bacterial quality of the effluent, और आपकी जो भी requirements हैं, जिस purpose के लिए आप उसको use करना चाहते हैं water को, उसके ऊपर depend करती है. So maturation ponds are well oxygenated throughout the day because the depth of the maturation pond is very less. So वो fully aerobic and presence of oxygen is present in the pond. Pathogen removal, the first one is bacteria. The principal mechanism for fecal bacterial removal in facultative and maturation pond are known to be the number one is the time and temperature. ठीक है, कितने टाइम के लिए आप उसको pond में रखते हैं और किस temperature पे bacteria kill होते हैं. High pH, that is greater than 9, and high light intensity. High light intensity together with the high dissolved oxygen concentration will help to speed up the mechanism for removal of fecal bacteria present in the water. So these two also represent the conceptual mechanism for fecal die of the pond. ठीक है, सो फोटो ऑक्सीडेशन यानी सनलाइट आपके पास होगी, pH 9 से ज़्यादा होगा, इंक्रीज पॉन्ड टेम्परेचर, ज़ाहिर सनलाइट होगी तो आपके पॉन्ड का टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और फोटो ऑक्सीडेशन मीन्स कि आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, हाई कंसनट्रेशन होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन से डीकम्पोज होगा आपका फीकल बैक्टीरियल मटीरियल और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स. सो पैथोजन रिमूवल में आपके पास वायरसेस आ जाते हैं. इट अकर्स
It occurs by absorption on the cellulable solids, including the pond algae and subsequent segmentations. अगर parasites present हैं, they will be removed by segmentation process, and continuously most removal take place in anaerobic and facultative ponds. So the method of Mara in generally used to design the pond series for a fecal removal ठीक है. सो मारा ने बेसिकली जो स्टडी की थी उसमें उसने फिकल बैक्टीरिया यानी पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए मैचुरेशन पॉन्ड को सीरीज में लगाया था. सो इसीलिए उसने जो है वो इक्वेशन जो ड्राइव की है दैट इज़ यूज फॉर द सीरीज नंबर ऑफ पॉन्ड्स. ठीक है, यानी जो पॉन्ड्स सीरीज में लगे हों. Fecal polyform removal is a first order kinetics, so you can use this formula for to check the effluent quality of the water. So Ne is the number of fecal coliform per 100 ml of effluent. Ni is the number of fecal coliform per 100 ml of influent. Kt is the first order rate constant for fecal removal per day. Theta is the retention time and day. For a series of maturation pond, effluent concentration of pathogens can be calculated by using this formula. Removal efficiency of pathogens can be calculated by using this formula. Whereas if you want to calculate the area of a maturation pond, so you can use this formula, that is retention time of maturation pond, Q of wastewater, that is the flow of the wastewater, and D is the depth of the maturation pond. So the values of Kt at various temperature for fecal coliform removal is given. ठीक है, यहाँ पे K जो है that is the basically rate constant और the rate at which the bacteria is killed. ठीक है, so K जो है वो आपको बैक्टीरिया डाई अवे कांस्टेंट, यूजुअली हम इसको 2.6 पर डे एट 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और के जो है ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. सो यू कैन कन्वर्ट एंड कैलकुलेट के एट एनी टेम्परेचर एंड द स्टडी डन बाय द मारा दे हैव गिवन द के वैल्यूज एट डिफरेंट temperature. Otherwise you can also use a K formula. You can apply a temperature correction formula for the calculation of the K. So effluent from a well-designed maturation pond generally has a BOD value of less than 30 milligrams per liter. So now we will perform a numerical in which we will design a waste stabilization pond for any community where we have to treat the water 10,000 meter cube per day of the water. And we will see different combination. We will design different waste stabilization pond for restricted or unrestricted irrigation, and then we will compare the results at the end of the numerical. So the next topic which we are going to discuss in today's lecture is sludge treatment and disposal. All conventional wastewater treatment process produces large quantities of the waste material in the form of dilute solid mixture which is known as sludge. The composition and the solid contents are the function of the raw wastewater. Primary and secondary sludges are mainly composed of water with the solid content of only 0.5 to 5%. Sludge also contains pathogens and inorganic contamination and nutrients. Sludge handling account for 30 to 40% capital cost, 50% operational cost, and 90% of operational problems in wastewater treatment plant. The purpose or the function of providing the sludge treatment is to reduce the sludge volume for the disposal, reduce the moisture content of the sludge, remove the pathogens, recovery of methane gas, and it can be used as a soil conditioner, and it can be used as fertilizers. Amount and characteristics of the sludge. Sewage sludge consists of organic and inorganic solids present in the raw sewage and removed in primary clarifier. Number 2, an organic solid generated in secondary treatment and recovered in secondary clarifier.
Specific gravity of organic content is slightly greater than the water and normally lie in the range of 1.01 to 1.06. The specific gravity of inorganic fraction in sludge can be measured as 2.5. A solid generated in a primary treatment that is approximately equal to 60% of the solids in raw wastewater. The biological solid generated in secondary treatment, it consists if the treatment is done by attached growth process, so it will generate 0.4 to 0.5 kg per kg of BOD applied. And for the suspended growth process like activated sludge process and irrigated lagoons, it will be 0.2 to 1 kg or per kg of BOD applied. Moisture content and the volume of the sludge. The effect of the moisture content on a sludge volume is humorous. Sludge handling techniques are directed towards reducing the moisture content and thereby the volume of the sludge. So through digestion, the moisture content of sludge reduced significantly as compared to a raw sludge as given below. So different techniques use होती हैं. जो most common है that is known as sludge digestion and it will be followed by sludge dewatering. And the following table represents the moisture content removed by using a sludge digestion and sludge dewatering process. जैसे कि primary segmentation, source of sludge, if the source of sludge is from primary segmentation tank, the moisture content will contain 90 to 96%, इसमें 94 से 96% इसमें moisture content होगा, but after sludge digestion this moisture content will be reduced to 88 to 94. इसी तरह activated sludge process और trickling filter से भी ये 94 से 96 और 90 से 94% moisture content को remove कर देता है. Sludge digestion may be anaerobic or may be aerobic. ठीक है, anaerobic sludge digestion offers following advantage and is preferred commonly over the aerobic digestions. The anaerobic digestion require no oxygen supply and it produces methane gas which can be used for as a purpose of fuel burning process. Volume and weight of the sludge can be found out by using the following formula. The first formula is to calculate the volume of the solid, that is equal to the weight of the solids, organic or inorganic जितने भी present हैं, divided by specific gravity, organic and inorganic weight of a solid in liters. ठीक है, इसके बाद आता है mass or the weight of the sludge in kg. So weight of the solid in kg divided by the fraction of solids. So you can calculate the volume and the weight of the sludge that can be found in the water. Now we will discuss the theory of sludge digestion. Sludge digestion, so anaerobic digestion इस तरह से बेसिकली प्रोसेस होता है. इसमें स्लज डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है. So the process include two steps. The first one is the acid forming bacteria and second one is a methane forming bacteria. So under anaerobic conditions, sludge digestion occur through two actions, that are two group of bacteria. One will perform in the presence of acid and second one will methane forming bacteria. So in the first step, the acid forming bacteria will break down the complex organic like fat, carbohydrate, protein, etc. present in the sludge into a simple organic compounds and fatty acids. Like carbohydrate will convert into fatty acids and amino acids will convert into ammonia plus fatty acids. Second one is a methane forming bacteria. These bacteria form methane gas and carbon dioxide by using acid and ammonia and other product of the first group. They act best in the pH range of 6.5 to 8 and more precisely within the pH range of 7.2 to 7.4. Methane forming bacteria require an inorganic source of nitrogen for their nutrition. They are inhibited by lowering pH, whereas acid forming bacteria are a bit resistant to low pH. Since acid forming bacteria work faster, the pH of the process may drop and methane forming bacteria may be adversely affected. As a result, the process pH can be obtained with the lime. However, the lime should be properly mixed up to avoid the local
concentration buildup. Usually 2 to 5 kg of lime per 1000 persons is added daily to the digesters. So sludge digestion is accomplished in an airtight steel tank. The modern digesters are both heated and mixed. So the process, the temperature is maintained at 35 degrees Celsius. Mixing is provided by mechanical driven propeller with the draft tubes, and it helps in maintaining a uniform temperature throughout the digester volume. The sludge is added to the digester at the least twice daily uniformly through various inlets. Nowadays, general two digesters are employed, and the process is called two-stage high-rate process as shown in the figure. So in a first stage, heating and mixing is provided, and in second stage, the subsequent and work as thickener. So the first digester is heated and mixed. The record digester is subsequent and serves primarily as a thickness for the sludge digester. Digester tanks are usually 6 meter to 50 meter deep. Hopper bottom slope is kept as 1 vertical 3. Diameter of digester may vary from 6 to 40 meters depending upon the capacity. Cover of digester may be floating or fixed. The fixed cover are low cost, but they minimize the danger of mixing oxygen with the gas to form explosive mixture. Also with the floating covers. The removal and addition of the sludge remaining independent of each other. The methane produced in anaerobic digestion is nearly universally used to heat the digester and in some instance to provide mechanical power to other plant processes. The digested solid from anaerobic process may be dewatered without further treatment upon open drying bed. So open drying bed is air drying bed, which is known as sludge drying beds, and it can also be used some mechanical methods to dry the sludge, that is by using belt filters or belt filters or belt press filters भी हम use करते हैं. So the purpose of the sludge drying bed is to dewater the digested and thickened sludge and to further reduce its volume. After drying, the volume of the sludge gets reduced by around 60%. Dry sludge cake can be used as a fertilizers. So the most common method of preparing digested and thicker sludge for final disposal is air drying on a sand bed. The sand drying bed is shown in the figure. So here we have 300 millimeter of freeboard, and it consists of 150 to 300 meter depth of coarse sand underlined by the layer of a graded gravel ranging from 3 to 6 millimeter dia at the top of 20 to 40 millimeter dia at the bottom. The total gravel thickness is 300 millimeter dia. The bottom of the bed slope towards the underdrain. The underdrain system consists of drain tiles placed on a trenches with the open joints. Side walls and partition between the bed sections are made up of concrete, and the freeboard of 300 millimeter is given as we discussed early in this slide. So beds are 6 to 10 meter wide and up to 40 meter long. At least 2 beds must be provided in even the small plant. Dewatering occurs as a result of drainage and evaporation and is heavily depending upon the climate. So covering the drying bed with the glass or plastic sheet is helpful in a wet or a rainy season. So loading rate, the bed are operated by filling with the digested solid to the depth of 200 to 300 millimeter. The small amount of sand may be lost with each drying cycle. The time required for dewatering may range from several weeks to a few weeks depending upon the climatic conditions. So the organic loading rate should be 6 to 200 kg per meter square per year for the digested solids. Drying takes place from few days to few months depending upon the climate and the season. So after dewatering, sludge solid content will range from 25 to 35% and the volume will have reduced up to 80 to 85%.
Belt filters. So belt filter is mechanical equipment या mechanical method to dewater the digested sludge. The most popular technique in new installation. These machines are used in a variety of configuration consisting of one or two endless woolen beds which pass over and around a number of cylinders. So as you can see in the pictures. Chemical additives are used to improve the sludge dewaterability. Chemically commonly जो use किए जाते हैं that is furic chloride, lime and organic polymers can be used. The product from a belt filter can be expected to have a solid content range between 12 to 40%. Typical 20% इसमें available होता है after the filter press or the belt press. So loading rate, that is kg per hectare per meter, belt width and performance of a belt filter vary depending upon the type of the sludge and the pre-treatment applied before the sludge digestion. Now we will perform one numerical related to sludge digestion, that is to estimate the solid production from a trickling filter plant treating 1000 meter cube per day of the wastewater with the BOD of 210 and total suspended solid of 260 milligrams per liter. Assume the primary clarifier remove 30% of BOD and 60% of influent solids. So the first step is to find out the removal of total suspended solids in a primary clarifier, that is equal to 60% of 260 milligrams per liter. So 156 milligrams per liter of total suspended solids are removed and the remaining is 260 minus 156. Secondly, हमारे पास प्राइमरी क्लेरिफायर में 30% BOD इज़ रिमूव्ड. सो इट्स मीन कि 30% BOD तो रिमूव हो गई है, तो 70% BOD जो है वो हमने ट्रीट करनी है. सो दैट विल बी, फिर हमने इसको मेजर कैसे करना, दैट इज़ 0.7 इंटू 210 इंटू 0.5, दैट इज़ इक्वल टू 74 मिलीग्राम्स पर लीटर. टोटल सॉलिड प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 156 प्लस 74, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 230 मिलीग्राम्स पर लीटर. अब यहाँ पर 0.5 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, जो हमारे पास स्लज प्रोडक्शन या स्लज प्रोडक्शन या BOD की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम अ ट्रिकलिंग फिल्टर, दैट इज़ फ्रॉम 0.4 टू 0.5 kg पर kg ऑफ BOD अप्लाइड. ठीक है, सो यहाँ पर हमने उसका 0.5 kg लिया है ऑफ सॉलिड प्रोडक्शन. ठीक है, यानी अगर आप 70% ऑफ 210 अप्लाई करेंगे तो उसमें सॉलिड कितने प्रोड्यूस होंगे, 0.5 टाइम्स ऑफ द BOD अप्लाइड आपके पास सॉलिड प्रोड्यूस होंगे. सो तो ये आपके पास 74 आ गया. सो टोटल जो सॉलिड प्रोड्यूस हुए हैं दैट इज़ 156 प्लस 74, दैट इज़ इक्वल टू 230 मिलीग्राम्स पर लीटर. सो वी विल जस्ट कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू ग्राम पर मीटर क्यूब एंड द सॉलिड प्रोडक्शन को कन्वर्ट करना है हमने था kg पर डे में, तो 230 डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे. सो वी विल गेट 230 kg पर डे. ठीक है, फ्लो से आपने उसको डिवाइड करना, तो फ्लो से आपने इसको मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास सोलिज प्रोडक्शन आ जाएगी इफ यू आर ट्रीटिंग 1000 मीटर क्यूब ऑफ द फ्लो. So now we will perform another numerical, that is the wastewater plant produces 1000 kg of dry solids per day at the moisture content of 95%. The solid are 70% volatile with a specific gravity of 1.05 and 30% are non-volatile with the specific gravity of 2.5. Volatile का मतलब है कि वो organic particles हैं, non-volatile का मतलब है वो inorganic particles हैं. Determine the sludge volume, हमने determine करना है sludge volume as produced. Number B, digestion reduces the volatile solid content by 50% and decrease the moisture content to 90%. Find the percentage reduction in the sludge volume of sludge after digestion.
और नंबर सी जो है वो ये है कि आफ्टर द डी वाटरिंग प्रोसेस विच रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट टू 75%, एंड द लास्ट पार्ट इज आफ्टर इंसुलेशन फाइंड द वॉल्यूम रिडक्शन. So first of all, we will find out the sludge volume as produced. So for that purpose, we have to find out the mass of the sludge, which will be equal to the dry solids per day at the moisture content. So dry solid हमारे पास आ जाता है 100 kg. So dry हमारे पास moisture content 95% है, तो remaining हमारे पास 5% बन जाएगा. So we will divide 1000 by 0.05, and the mass of a sludge will be equal to 20,000 kg. So now in 1000 kg of solids, 1000 kg of solids में we have 70% volatile, which is equal to 700 kg. ठीक है, volatile organics present हैं, whereas non volatile is 30%, so it's 300 kg. So the now weight of the water will be 19,000 kg. The volume of water will be 19,000 liters. So volume of volatile solid, that will be equal to the weight of the solid divided by specific gravity, that is 700 divided by 1.05, and that will be equal to 666.67 liters. Whereas the volume of non-volatile solid, that is equal to weight of the solids divided by specific gravity, which is equal to 300 divided by 2.5, and that is equal to 120 liters. The total volume of the sludge will be equal to the volume of the water plus volume of volatile solid plus volume of non-volatile solid. So total will be 19787 liters as produced. तो ये आपका volume of liter sludge होगा जो produce हुआ है. After that, we will calculate the sludge volume after digestion. The solid volumes are produced to 350 kg. Thus, the total solid content become 350 plus 300, that is equal to 650 kg. The mass of a sludge is 650 divided by 0.1, that will be equal to 6500 kgs. तो 650 kg are solids, therefore water जो है वो आपके पास 550 liters होगा. Volume of volatile solid, that is 350 divided by 1.05, that is equal to 333 liters. Volume of non-volatile solids, that will be equal to 300 divided by 2.5, which is equal to 120 liters. Total volume of a sludge जो होगा volume of water plus volume of non-volatile solid plus volume of volatile solid, that is equal to 6303 liters. So the percent reduction in volume will be equal to 68%. So this is the third numerical, and the solution of the third numerical is provided on the slide, and hopefully you will understand it. Otherwise, we will discuss these all numericals or problems in the question answer session if you want. After that, the next topic which we are going to discuss is the on-site wastewater treatment. So on-site wastewater treatment techniques, wastewater management techniques. My first one is includes a septic tank. The septic tank basically क्या होता है? It's an underground structure provided from individual houses. The basic and it is principally used for the treatment of the wastewater from the individual houses. Basically carry out the primary treatment and reduce the suspended solid loads. Although a single chamber tank can be used, however, 2 or more compartments in septic tanks are always used. So in a dual compartment tank, the first compartment provides the segmentation, sludge digestion and sludge treatment, sludge storage, and the second compartment provides the additional segmentation and sludge storage capacity, and thus serve to protect against the discharge of sludge and suspended solids that can escape from the first compartment. So two functions will be performed, that is the clarification and second one is the treatment. So there are the two compartments provided in the septic tank. So the
compartment. The function of first compartment is, as we discussed in the previous slide, so it will allow the particles to settle down under the force of gravity, and also the settled solids will digest under the anaerobic conditions, and secondly it provide a sludge storage capacity also. So in a second compartment provide the extra additional segmentation and sludge storage capacity, and thus have to protect the discharge of sludge and suspended solid that can escape from the first compartment. So the other on-site wastewater management technique include a sockage pit or a sockway. So sockage pit or sockway is provided in the absence of any sewage collection system. The effluent from a septic tank can be disposed in a sockage pit. It's an underground soil treatment system which receive partially treated sewage from the septic tank and dispose it out into the soil. So effluent from a septic tank must be discharged in a socket pit, and the bottom of the socket pit must be at least 3 meters above the groundwater table. So the last topic which will be discussed in this lecture is environmental impact assessment, और इनको हम short form में EIA कहते हैं. So environmental impact assessment is basically the assessment of all the potential environmental, social and health effect that would result on the account of location, construction, design and operation of a proposed development project. So this assessment is known as environmental impact assessment, and the result of assessment are assembled in the document form and it is reported in terms of environmental impact statement, जिसको हम EIS कहते हैं. So initial environmental examination is a first step to evaluate the environmental impacts, whether it is a positive or negative impact that is occurs in surrounding due to the construction or development of any project, in order to determine whether the full-scale environmental impact assessment is needed or not. So this study is known as initial environmental investigation. So after initial environmental investigation, we will decide that the detailed environmental impact assessment is needed or not of any developmental project. So the change in the environmental parameter specified over a period of a time within a defined area that is resulted from the particular activity will be compared with the situation which would have occurred had that activity not been initiated. So we have environmental parameters like land, condition of the land, water quality, air quality, social effect of that project on the residents living nearby that project, and also the job opportunities. So you can see the graph here. So on the x-axis we have time. So there are two graphs. One with the green color shows the situation with the activity performed, and second one line shows the situation with no activity performed. And the difference of these two graph will tell you the impact of that particular project on the environmental parameters. So this red color line is showing you the existing situation, whereas the blue line is showing the situation with no activities performed in that particular area, whereas the green activity shows the line which activity performed on that particular area. So impact negative भी हो सकते हैं और positive भी हो सकते हैं. So we have positive impacts. कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक वी हैव अ जॉब अपॉर्चुनिटी, और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑरेंज लाइन की, कि जब ये ऑरेंज लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो वहाँ पर काफ़ी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी हैं इस प्रोजेक्ट के. सो जनरल हमारा EIA का प्रोसेस में क्या स्टेप्स होते हैं, हमारे पास जनरल स्टेप्स जो है वो हम परफॉर्म करते हैं.
सो ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर है दीज आर द बेसिक जनरल स्टेप्स, और यहाँ पे जो मिड वन राइट साइड पर है उसमें हमें डिटेल है कि हम हर स्टेप में बेसिकली किस टाइप के इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रीनिंग, जिसमें हम प्रोजेक्ट के प्रपोजल को देखते हैं और उसमें देखते हैं उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या इस प्रोजेक्ट को डिटेल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, सो आफ्टर दैट हम स्कूपिंग करते हैं। स्कूपिंग ये है कि जितने भी उस प्रोजेक्ट में रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं या की इश्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं विद द कम्युनिटी और विद द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद स्कूपिंग मीटिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन दिस स्टेप वी विल कलेक्ट द बेसलाइन डाटा and we will identify the potential environmental impacts, and we will analyze the different alternatives or try to reduce those environmental impacts performed by the particular project. The next step after the identification and analysis of information, we will go towards the present finding in which we will prepare the environmental impact statement. So जो भी हमने information यहाँ पर collect की होगी उसको एक document के form में और report के form में हम सबमिट करवाएंगे टू द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, सो आफ्टर प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स द EIS रिव्यू विल टेक प्लेस। So have terms of reference and standards of practice being met or not, that will be decided by the EIS review team. So after that the last step is the post project analysis. So जितने भी impacts हैं वो acceptable level पर manage हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उसको हम देखेंगे। So after that performing the detailed EIA process, the project जो है वो start होता है। और अगर हमारे पास ये एक्सेप्टेबल लेवल तक मैनेज नहीं होते तो फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होते। सो ये हमारे पास जनरल EIA के स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर हमने इसको फिर से डिस्कस किया है कि स्क्रीनिंग बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन वेदर द इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन और EIA विल required or not. In a scooping step we will identify the key issues which will be included in EIA. It includes the consultation with relevant agencies, stakeholders, local representatives and experts. In a third step, the baseline study, so it includes the collection of information on the characteristics of existing environment, physical, biological and social economic condition in the study area. The baseline study also includes the detailed description of the proposed project activities and assess various pollutants that would be result from the activity. Fourth one is the identification of significant environmental impact. These include the steps impact prediction and impact evaluation, and the fifth and the last step is analysis of alternative, that is to find out the different alternative of the project, or these alternative will be analyzed on both the economical and environmental measures. And sixth step is a mitigation measures adopt करेंगे, and seventh one is environmental monitoring and management plan. So in this environmental monitoring or management plan will provide a framework for mitigating environmental impact for the life of the project. It also makes the provision for editing the effectiveness of proposed environmental protection measures and